नमस्कार। होपोनोपोनो एक ब्यूटीफुल मंत्र ऑफ हैप्पीनेस। इस प्रेयर के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, मगर प्रश्न ये आता है कि ये बोला कैसे जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 ब्यूटीफुल फ्रेजेस बोलने के बहुत सारे तरीके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 अलग अलग मेथड्स बताऊंगी। 8 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेइंग होपोनोपोनो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हाय, दिस इज मेनका। Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset and embrace opportunities and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. तो दोस्तों, होपोनोपोनो एक ब्यूटीफुल हवाईयन प्रेयर जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा, यूज़ भी किया होगा, मगर क्या आप इसे सही तरीके से बोल रहे हैं? क्या आपको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या आप इसको बोलने के बाद थोड़े दिनों के अंदर ही छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या आपको मुश्किल फील होती है, या आप उस एनर्जी में नहीं रहते हैं जिस एनर्जी के साथ आपने शुरू किया था? तो ऐसा कौन सा मेथड है कि हम इसे कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकें, अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकें और सबके लिए बहुत आसान हो? तो चलिए सबसे पहले मेथड के बारे में बात करते हैं। हमारा मेथड नंबर 1 है वोकल चैंटिंग। वोकल चैंटिंग का मतलब है आप इस मंत्रा को, आप इन 4 फ्रेजेस को जोर से बोलेंगे, यानी कि आप ऐसे बोलेंगे कि आप खुद सुन सकें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और आप इसे लगातार 5 से 7 मिनट, 10 मिनट जितना आप बोल सकें बोलें। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप 10 मिनट इसे ज़रूर बोलें, क्योंकि उससे आप एक वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो आपकी ऑरा में मिक्स होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और एक ऑटोनोमस लूप में चलने लगता है। सो हमारा पहला मेथड है वोकल चैंटिंग। आप इसे जोर से बोल सकते हैं, आप इसे बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं, या आप इसी को एक गाने के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप बैठ करके मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप इसे रेगुलरली चैंट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. You can sing this song. आप इसे अपनी कोई भी धुन दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले वोकल चैंटिंग का हमने 3 ABC सुना। नंबर 1, you can say I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Number 2, you can record this for 5 to 10 minutes and okay, you can hear it repeatedly by using a earphone if you are doing some other work. Number 3, you can sing this while doing any other work, so that physically you are engaged with some work, but mentally you are with the loop of Ho'oponopono prayer. Okay, the second way of using Ho'oponopono is silent chanting. Silent chanting gives more power to Ho'oponopono, क्योंकि जब हम जोर से बोल रहे होते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते ज़रूर हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। मगर अगर आप साइलेंट जप करते हैं, अपने मन में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये आप अगर अपने माइंड में साइलेंटली बोलते हैं तो आप उसमें ज़्यादा एनर्जीज देते हैं, क्योंकि उस समय आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है और आपका पूरा का पूरा फोकस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू पे चला जाता है। और आप इसे विजुअलाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि आप जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को
या किसी सिचुएशन को हील करना चाहें तो आप इसे विजुअलाइजेशन के साथ साइलेंट जप करके भी कर सकते हैं. सो द सेकेंड मेथड इज साइलेंट चैंटिंग. इसको करने के लिए हम जोर से नहीं बोलते हैं, हम मन में बोलते हैं. अपने माइंड का बटन हम स्विच ऑफ करते हैं और अपनी जो एनर्जीज है, जो फोकस है, वो हम साइलेंटली जप पे लगाते हैं और हम अपने विजुअलाइजेशन के थ्रू पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के पास या किसी सिचुएशन में या किसी इश्यूज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम वहाँ ध्यान लगाते हैं और हम वहाँ पर अपने जप की एनर्जीज को भेजते हैं. द थर्ड मेथड इज आप होपोनोपोनो अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ कर सकते हैं. दैट इज अ ब्रेथ वर्किंग. So you can do Hooponopono by using your breathing exercise. How do I do it? So when you inhale, you do a count of 1, 2, 3, 4. Give a pause of 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. And again give a pause of 1, 2, 3, 4. So how it works? I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So when you inhale 1, 2, 3, 4, you'll say I am sorry. When you take a pause of 1, 2, 3, 4, please forgive me. When you exhale 1, 2, 3, 4, thank you. When you give a pause 1, 2, 3, 4, I love you. So let's do it with an example. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. So you can do it with your breathing exercise. This will give you 2-in-1 benefit. One, that you will be able to do your breathing, you will be syncing with your soul, you will be able to focus more towards yourself, your journey, your soul, to yourself, and at the same time you can chant this 4 phrase of Hooponopono with your breath, syncing to yourself. The fourth way of doing Hooponopono is the whispering method. For example, if you're not able to say it loud, you're not having time for meditation, you are not able to visualize, you're not able to sing because you're occupied in some work, then how do you chant Hooponopono? So you can whisper so that you're not making the others aware of what you are doing, but at the same time you are with the prayers of Hooponopono, so you can whisper and say, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. So that is also a type of a middle prayer. This is a version of being not loud and not silent, but whispering so that you hear it, but your focus is still very much into the prayer. So this is the fourth method of chanting Hooponopono. Now let's go to the fifth method. The fifth way of doing Hooponopono, which I have discovered, is writing. हम अक्सर एक जप किताब खरीदते हैं जिसमें हम अपने जो भी मंत्र चैंट करते हैं वो हम लिखते हैं. कई बार जब हमें 108 बार कोई जप को करना होता है तो हम उसे उस जप बुक में लिखते हैं. So you can use that same method in Hooponopono. You can do it in 369 method every day. That means 3 times in the morning, 6 times in the afternoon, 9 times in the evening before sleeping. Or else you can do it 108 times any part of the day to complete it. For example,
If you're writing, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you, this makes it count 1. So you have to write these 4 phrases 3 times in the morning, 6 times in the afternoon, and 9 times before going to the bed. You can keep this journal near your bed so that you remember when you wake up. For the afternoon, you can carry this journal wherever you are going. But if it is not possible, then you can write 6 plus 9, that is 15, before going to the bed. This is one way of writing the journal, 3-6-9 method. If you are not able to do this, you can write as many times according to your comfortability. You can make it a count of 11 or 21 or 33 or 66. So you have to write, I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Now this journal also, I advise that if suppose you have a particular person for whom you wish to write, you can include the name, you can write the situation, you can convert it into a letter, and you can do Hooponopono by writing a letter to that person. This is the 5th method of doing Hooponopono. Now, moving on to the 6th method. 6th method is always done with either a guided meditation, so somebody will be guiding you. It can be an audio guidance or it can be a live guidance. You can visualize, you can energetically move to a situation, a person, and then you can chant these beautiful phrases, or else you can do this by either an audio which you can hear and get yourself guided. You can also do it with the method of Tratak, in which you light a candle, see the candle, and do the chanting of Hooponopono. So the 6th method is a guided method of Hooponopono, and it works really well because you can be completely focused by listening to the guide that your healer is doing for you. So the energy that you have to invest will be dual of the healer as well as you. So this is the 6th method of doing Hooponopono. Now moving on to the 7th method. So the 7th method is you can do Hooponopono by movement method. Now what do you mean by a movement method? You can do Hooponopono while walking. So you can fix up your number of steps, that you will be taking 5,000 steps of Hooponopono, you will be taking 2,000 steps of Hooponopono, you will be taking 1,000 steps of Hooponopono. It all depends on you. While taking the step, you can say, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. The movement will make you aware and you will be consciously doing Hooponopono till you complete your number of steps. So in that way, you are giving that much time to the movement as well as to Hooponopono. So it gives dual benefit of doing Hooponopono plus a walk. The benefit of your exercise, your physical movement. So this is the next method of Hooponopono. Coming down to the last method of Hooponopono. Hooponopono can also be done with water. And this works really well. You can use water, chant Hooponopono, hold the glass of water, say whatever you wish to, erase, release, or accept. Clear all whatever is not needed in you, release whatever is blocking you, drink the water with Hooponopono, and you will feel that now you are feeling very light. So these were the beautiful different methods that you can use to say the miraculous phrases Hooponopono. I hope you liked the video. If you liked it, please do share and comment, and also let me know which method you have adapted to say this
beautiful prayer. And do share the stories if you all are benefiting from Hooponopono prayer. Last but not the least, today I am giving you all a challenge of 21 days of Hooponopono. मैं आपके साथ 108 बार Hooponopono बोलने जा रही हूँ. कल से 21 डेज के लिए आप मेरे साथ 108 बार 108 times you all can recite Hooponopono prayer with me, or you can use this audio for your vocal Hooponopono. So be prepared, be ready, because I am challenging you. और जो भी मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, write in the comment box yes with a red heart, and do share whatever shift you all are experiencing after these 21 days of chanting. If you all need any personal healing from me, the number is in my description box. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं पर्सनल हीलिंग सेशंस भी देती हूँ ऑनलाइन. आप उससे बहुत सारी चीज़ें मुझसे ले सकते हैं. आई गिव गाइडेड मेडिटेशन, आई गिव मोर टूल्स टू यू. आप मुझसे जब कनेक्ट होंगे पर्सनल हीलिंग के लिए, तो मैं सिर्फ होपोनो ही नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में भी आपको बताती हूँ. मैं बहुत सारे और भी टिप्स एंड टूल्स आपको देती हूँ मनी वोटेक्स एंड रिलेशनशिप वोटेक्स के लिए. So if you want any personal healing, you can contact me. मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So stay tuned, stay connected, and see you tomorrow with the first day of 21 days challenge of 108 times Hooponopono chanting. तब तक के लिए नमस्कार.